For example, if the uveitis is due to Ritis-Zorytis syndrome, whatever that the pronunciation is. So if we treat the chlamydia infection, we can treat the uveitis. Similarly, if uveitis is due to Mycobacterium tuberculosis, we will treat the tuberculosis and it will also treat the uveitis. If it is due to syphilis, if we treat syphilis, if we give intramuscular penicillin G, we can treat the uveitis. So whenever we're discussing any treatment of a disease, we will start these are the modalities of treatment. Okay? We will start with number one. We will say that there's medical treatment and then there is surgical treatment. However, in this case of uveitis, there is no clear-cut differentiation between medical and surgical treatment. क्योंकि mix हो जाती है. So what we will say that जिसमें जोगी में उसने बताया, we will say that there is a local treatment, okay, which will include topical steroids, topical mydriatics, topical NSAIDs, antibiotics. Then there's a systemic treatment. This systemic treatment will include all of the above, steroids भी, mydriatics के अलावा, NSAIDs, antibiotics. So you will give systemically. Also, this includes antimetabolites. Heat application is in local treatment. इसको यहाँ से करते हैं. And last is the treatment for the complications. The last and third is treatment for the complications, in which we will write number one. For glaucoma, we will do iridectomy. For cataract, we will do phacoemulsification. Okay? If there's a retinal detachment, उसके लिए हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, vitrectomy कर सकते हैं. ठीक है, plasma vitrectomy. And 8 is treat the cause. So whenever we're discussing the treatment of uveitis, these are the things which we have to do. So we have 5 to 10 minutes more. कहते हैं anterior uveitis को. अच्छा, another case which I want to discuss, symptoms जिसके important है हमारे लिए at this moment. मैं आपको इधर ही लिख लेता हूँ इसी के नीचे. This is the case. What are the signs and symptoms in this case? Signs, yes, man. What are the signs in this case? Distortions, flashing. That's good. Distortions in the vision. Flashing in front of our eyes. What else? Objects in different sizes. Objects appear in different sizes. Bilateral. Distortions in the vision, complaining bilateral के जिसमें मैंने I think जिक्र नहीं है इस केस में. क्या है? What else? There is one more symptom. A very Buildings repair. Yes, the age is also female. Okay? And gender. And the gender also. So these are more or less the important points in the history. Okay? So just we will disregard the age and the gender of the patient for one moment. Distortions of vision. What are distortions of vision called? One symptom is distortion of vision. What do we call a distortion of vision? और ये symptom किस चीज का symptom है? जो सारे symptoms से बताओ. Where do you think this is the anatomy of these symptoms? Where is the lesion for these symptoms to appear? सारे visual symptoms हैं. Obviously, we're discussing ophthalmology. सारे visual symptoms ही होंगे. Posterior uveitis. Okay. These are retinal symptoms. Okay. Distortions in vision, flashing in front of the eyes, buildings appearing wavy, and buildings appearing in different sizes. Okay. All of these are retinal symptoms. And why are there retinal symptoms in this case of uveitis? मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले. Choroid involved है.
बिल्कुल. Posterior Whenever there Posterior is uveitis. whenever there is an inflammation of the choroid, it will present with retinal symptoms. So in this case, the retinal symptoms are कौन से retinal symptoms हैं? क्या नाम है इनके? We have number one, Metamorphasia. or metamorphopsia. Number one, we have metamorphopsia. What is metamorphopsia? जो vision distortion और wavy Exactly. patterns. This is metamorphopsia, that the vision appears wavy and there are distortions in the vision. Okay? This is number one, metamorphopsia. What is the second? Photopsia. Second is photopsia. What is photopsia? Flashing of light. Flashing of light inside in front of the eyes. Okay? That is good. What is buildings appearing wavy? What is this? This is Macropsia. no. Micropsia. Metamorphopsia. This is also metamorphopsia. Buildings appearing wavy. Buildings are straight. Okay? They're erect and they are straight. When they start to appear wavy, which means that there is metamorphopsia. Number four, objects appearing in different times. Macro slash micropsy. Okay? Metamorphopsia is tested using this is an MCQ. If हम retina में पढ़ेंगे, we will discuss this again. Where metamorphopsia is detected using Hess screen. It's a screen with straight lines and straight dots. If there's distortion is seen, then we can detect or diagnose metamorphopsia. This was more or less the overview of uveitis. दो cases और हैं uvea के अंदर जो हमने करने हैं अभी. ये हम इंशाल्लाह अगली बार करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है. What I want you to do is just quickly revise the symptoms and signs. ठीक है, हमने investigations हमने देख ली. These are all the investigations. We saw the complications and we saw how we will treat this. Now, treatment में एक बात है, then we'll move on to the symptoms. Mydriatics. Mydriatics are contraindicated. Mydriatics आपने बात की ना? Mydriatics are contraindicated in which disease? Glaucoma. Okay, that they are contraindicated in glaucoma. Cyclopen and atropine. Okay. So that is why we have to be sure in diagnosing uveitis. क्योंकि हमने जब symptoms discuss किए थे, redness, blurring of vision and pain, these are also the symptoms of acute congestive glaucoma. So how on examination will we differentiate between acute congestive glaucoma and anterior uveitis? जो examination पे signs है, circumciliary congestion. Glaucoma भी होगी. Circumciliary congestion is also present in acute congestive glaucoma. KPs नहीं होते. KPs नहीं होंगे और Aqueous flare नहीं होगा. aqueous flare नहीं होगा और क्या है? साइनेकिया नहीं होंगे. साइनेकिया नहीं होंगे. ठीक है, ग्लाकोमा में ऐसा क्या होगा? ठीक है, these will be the positive findings in which will lead us to believe that diagnosis is uveitis. What will be there in case of glaucoma? Acute congestive glaucoma में क्या होता है? Angle narrow होगा. That is a predisposition. जब glaucoma हो रहा है तो तब क्या होगा? Angle close हो जाएगा. So when we will use a gonioscope, ठीक है, gonioscopes are used to see the angle. Whenever we use a gonioscope to see the angle, that's spelling. This is a gonioscope. The procedure is called gonioscopy. Whenever we use a gonioscope to see the angle, we will see that the angle is closed. Uveitis में angle close नहीं होगा. So that is how we can differentiate person with these symptoms, whether it is acute glaucoma or anterior uveitis. So the mainstay इसमें जो important चीज है, जो uveitis में और keratitis में जो discuss करेंगे, you always have to write. बाकी चीजें आप लिखो, immunosuppressant antibiotics आप ना लिखो, you will be forgiven. Heat application, if you do not write, you will be forgiven. NSAIDs, if you do not write, you will be forgiven.
What you will not be forgiven is if you do not write atropine. ठीक है, आपने ये मुझे पढ़ के अगली बार जब हम यूविया के 2 केसेस डिस्कस करेंगे, you will tell me why atropine is necessary, is absolutely essential, is the mainstay of treatment in uveitis. अगर यूवेइटिस की कॉम्प्लिकेशन में ग्लोकोमा हो गया, लाइक इस पॉइंट तक पहुंच गया, तो फिर भी हमें रिएटिक्स नहीं देंगे? Vitratics सब हम देंगे, बिल्कुल देंगे, तब देंगे। तब देंगे, क्योंकि इसमें the nature of glaucoma is different. अगर आप कहती हो तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, but the time is over, तो मैं इसलिए इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा था. If you want, we can discuss it now, or we can discuss it next time. जिस तरह आप कहो. ठीक है, I think we should next time discuss कर लेंगे. Next time start में discuss कर लेंगे, क्योंकि अभी 1-2 चीजें और रहती हैं. So next time you will tell me why atropine is absolutely necessary in patients of uveitis. तो brief overview, और फिर मैं आपके questions जो last time के आंसर करूं, और फिर उसके बाद हम अपने रास्ते जाएं. So if अच्छा, so in iritis we will have signs and symptoms, दोनों mix करके बताने. What we will have? We will have APs, we will have aqueous flare, we will have synechia. Okay? More or less, these are the symptoms. We will have circumciliary congestion, ciliary congestion. Okay? In pars planitis and cyclitis, we will have vitreous opacities of floaters. That's good. In floaters. Okay. Actually, there is also a finding which is specific to pars planitis. उसकी पिक्चर एज सच नहीं आती, MCQs में पूछ लेते होते हैं. It's asked in MCQs, or scenario will be given and you will be asked it. That is called snow banking of peripheral retina. Okay, pars plana is present at the ora serrata. ठीक है, यहाँ पे choroid start होता है. That is the most peripheral part of the retina. वहाँ पे whenever there is inflammation, there is exudation. और वो exudation, that appearance is called snow banking of the peripheral retina. ठीक है, ये रट्टे वाली ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपको बाद में. whenever we discuss it next time. So choroiditis में क्या symptoms होंगे हमारे पास? Vision distortion, Metamorphopsia, photopsia, photopsia, macropsia, micropsia. Yes. इन symptoms की basis पे you will always differentiate whether the case or the clinical presentation is of anterior uveitis or iritis, intermediate uveitis including cyclitis. Cyclitis interior में include कहते होते हैं, ठीक है. pars planitis को और posterior cyclitis को हम intermediate uveitis कहते हैं. And whether it is posterior uveitis, which includes choroid and is called choroiditis. यही symptoms हैं जिनकी आप basis पे करोगे. Always remember that if only this is given, you cannot eliminate these two, क्योंकि इन दोनों के होने के बाद कुछ ना कुछ हद तक you will also see KPs, aqueous flare, synechia, ancillary congestion. इसको spill over uveitis या pan uveitis भी कहते हैं. तो one more thing, और फिर आपके questions थे last time वाले. अच्छा, what is phthisis bulbi? होता ये है कि when the ciliary body is involved and there is a cyclitis, that inflammation of the ciliary body, उसकी वजह से exudate जमा होना शुरू हो जाएगा ciliary processes के ऊपर. Due to that accumulation of exudate, the ciliary bodies will not be able to secrete aqueous humor. And if aqueous humor is not being secreted, IOP, intraocular pressure, will fall. Okay? Number one. Secondly, important nutrition to the cornea and to the lens, it will be lost. What will happen that the eye will shrink. It will be a painless shrinking of the eye, and vision will be lost in that eye. This is the end stage of any uveitis. इनमें से कोई भी uveitis हो, क्योंकि choroiditis हो, it will spread to cause involve the ciliary body, and it will spread to involve the iritis. And whenever there is long-standing and recurrent inflammation, recurrent uveitis, it will ultimately lead to phthisis bulbi.
That is the end complication of uveitis. ठीक है? So this was all about retina in uveitis in today's session. Last time questions जो पूछे थे, क्या पूछे थे आप लोगों ने? याद है किसी को? एंटीबायोटिक्स कब तक देते हैं? वाला था। बिल्कुल। Antibiotics are including syringing and probing. अच्छा, specifically it is not mentioned कि antibiotics और probing के दौरान syringing और probing के दौरान antibiotics continue कहते हैं नहीं, लेकिन जो basic principle है जो online मैंने पढ़ा है, that is that during syringing and probing if there is an increase in infection और inflammation के signs पड़ रहे हैं, तो besides syringing and probing we will also continue antibiotics as well. हाँ, वैसे भी सिरिंजिंग प्रोबिंग करने से पहले एक्यूट इन्फेक्शन खत्म हो जाना चाहिए ना, देन ही हम उसको जो इन्वेट करते हैं। ये जरूरी नहीं है, ठीक है? एंटीबायोटिक्स दे कंट्रोल, एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट कहते हैं ना, दे बेसिकली दे कंट्रोल द इन्फेक्शन, लेकिन व्हेनेवर क्योंकि लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, एंड ऑल ऑफ आवर बॉडी कैविटीज, ऑल ऑफ आवर सैक्स, कोई भी हो हमारे, दे ऑल हैव बैक्टीरिया, ठीक है? दैट दे आर नेचुरल फ्लोरा ऑफ आवर बॉडी, तो वहां पे बैक्टीरिया इट विल एक्यूमुलेट, तो वहां पे उसकी इतनी accumulation that it causes an inflammatory or infectious reaction and it does not progress to a lacrimal abscess. उसके लिए we need to continue antibiotics. So during syringing and probing, if there is that clinical suspicion, we will continue with antibiotics as well. The second is differentiate between scleral and episcleral vessels. Scleritis और episcleritis में differentiation थी. अच्छा, episcleritis is episclera ना is basically a layer of the sclera. The conjunctiva और sclera proper के दरमियान पड़ा होता है. तो one differentiation is that, चलो मैं आपको ऊपर differentiate बताता हूँ. Differentiation between conjunctivitis and episcleritis is that in episcleritis there will be no discharge because the conjunctiva is not involved. ठीक है? जब आप phenylephrine डालेंगे, do a phenylephrine test, the vessels they will blanch in both conjunctivitis and even in episcleritis. Okay. However, in conjunctivitis there will be a discharge. In episcleritis there will be no discharge. Comparing episcleritis to scleritis, when we perform the phenylephrine test, in episcleritis the vessels they will blanch. However, in scleritis they will not blanch. Okay. ये principal difference है between scleritis और episcleritis का. And the last is रिजा ने थोड़ा सा पहले पूछा था बायोटेम्पोरल लॉस ऑफ पीपल रिफ्लेक्स का, तो हम न्यूरोलॉजी ऑफ विजन जिस दिन हमने डिस्कस की थी. अच्छा, टोसिस का मुझे नहीं मिला रिचा, अगर आप उसकी पिक्चर भेज देना मैं सर्च कर लूंगा, मुझे ऐसे कुछ नहीं मिला पास में, तो जो एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं वो मैं देख लूंगा. इफ आई फाइंड एनीथिंग आई लेट यू नो. होता ये है कि जो आप पूछ रही थी, व्हेन देयर इज लीजन्स ऑफ द chiasm, optic chiasm, so we know that there is bitemporal heminopia. ऐसे ही है ना? Yes. ठीक है, there is bitemporal heminopia. तो होता ये कि from the vision fields जो lose हो रही हैं, both the nasal retinal fields are being lost, right? So those natural fields, when the afferents from them are being lost, उससे ये होगा कि pupillary reflex के afferents भी वही हैं. When they are being lost, so the pupillary reflex that will also be lost in that field of vision. इसका मतलब ये है कि if we try for a pupillary reflex from the temporal side, no pupillary reflex will be elicited. ठीक है? Normally ये होता है कि जब pupillary reflexes light हम थोड़ा side से लेकर आते हैं ना, जब reflex perform करते हैं, in the center both nasal and retinal fields are being involved. However, if we perform the light reflex and on the right eye हम बिल्कुल temporal fields लेकर आ रहे हो, in the normal person there is some constriction due to the temporal afferents, sorry nasal retinal afferents. लेकिन जब उनकी loss हो जाएगा, so there will also be a loss of the reflex on the temporal side. So whenever there is lesion of the chiasm, it will cause bitemporal heminopia with bitemporal loss of pupillary reflex. यानी कि जहाँ पे vision field का loss है, वहाँ पे pupillary reflex का भी loss है. जो visual field उस patient को या बंदे को नजर नहीं आ रही, वहाँ से उसी field के बाहर से आप pupillary reflex भी elicit नहीं कर सकते. That is the concept which he is trying to. ठीक है, सही. समझ आ गई है? जी आ गए.
ठीक है, तो बाकी हम यूवी इंशाल्लाह अगले बार कंटिन्यू करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो. आप उसमें टाइप कर देना, उसके आंसर्स भी अगली बार डिस्कस कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने मुझे बताना है कि व्हाई इज एट्रोपिन एसेंशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूवीआइटिस. ओके. ठीक है, अभी कुछ पूछना है? हाँ, एक बात पूछनी है मुझे. जी बताओ. बुक में ऐसा मेंशन किया हुआ था कि यूवीआइटिस में पेन वर्सेस एट नाइट. ऐसा क्यों है? मतलब व्हाई ओनली एट नाइट? व्हाई इज हाँ, पेन वर्सेस एट नाइट. बिल्कुल, इसका मैं आपको बताता हूँ. सही से निकल रहा है अभी. पेन वर्सेस एट नाइट का ये होता है, आई थिंक एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज्यादा होती है. इसकी 2 या 3 फैक्टर्स हैं जो मैं आपको कंफर्म नेक्स्ट टाइम बता दूंगा. इसका एक तो ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन से इसको रिलेशन है. सेकंडली जब रात को लेटते हैं तो देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन के सारा जो है ना ट्रॉपिकल मॉइस्चर का इफेक्ट होता है. आई थिंक दीज वर द 2 रीजंस. मैंने काफी ऐसा पहले पढ़ा था. आई एम नॉट एबल टू रिवाइज एट दिस मोमेंट. मुझे इसको याद करना भूल गया. तो ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसका आंसर जो है ना पक्का बता दूंगा. ठीक है, और कुछ किसी ने पूछना? पोस्टीरियर यूवेटिस में एक ये भी सिम्टम बताया हुआ था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्कोटोमा. तो ये क्या होता है? दोनों में डिफरेंस? पॉजिटिव और नेगेटिव स्कोटोमा. ठीक है. अच्छा, अभी हम सबका ब्लाइंड स्पॉट है. ठीक है, एवरीबॉडी हैज अ ब्लाइंड स्पॉट जो ऑप्टिक नर्व से कोरिलेट करता है. आपको इस वक्त नजर आ रहा है वो ब्लाइंड स्पॉट? कैन यू अप्रिशिएट दैट ब्लाइंड स्पॉट इन योर विजुअल फील्ड? No. नो. नो. However, there is a blind spot. जब आपकी पैरामीट्री करेंगे, आपकी पैरामीट्री बेशक मैनुअल करें कि मशीन पे करें, there will always be a blind spot. ठीक है? So this blind spot is called a negative scotoma, in which a blind spot is present. However, we cannot appreciate the person is not able to appreciate that blind spot consciously. Similarly, if there is a blind spot, लेकिन आप कह सकते हैं कि हाँ, I am seeing black in that area. Let's suppose कि आपका जहाँ पे physiological blind spot है, instead of not being aware, you're seeing a black spot at that place. This is called a positive scotoma. ठीक है, समझ आइए थोड़ी बहुत इसकी. Okay. Positive scotoma means that there is a blind spot. There is a loss of visual field. However, something is being perceived. The patient is able to appreciate a black spot. कह रहे कि मुझे वहां पे नजर नहीं आ रहा. In a negative scotoma, there is a loss of visual field or a blind spot in the vision. However, the patient or the person is not able to appreciate that loss. उसके मुताबिक जिस तरह हम सारों का physiological blind spot है, but we are not able to see that blind spot, which means that we have a negative physiological scotoma. अब उसी तरह एक और scotoma हमारे vision में आ जाए, and we're not able to appreciate it, that will also be a negative scotoma. ठीक है. इस तरह लॉस ऑफ रेटिनल फील्ड्स हैं, इसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ. अगर रेटिनल फील्ड, इफ यू लूज अ पार्ट ऑफ अवर रेटिनल फील्ड, ठीक है, रेटिनल फील्ड इट विल बी सिमिलर टू द फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट ना, जहाँ पे ऑप्टिक डिस्क होती है. So a loss of retinal field can cause a negative scotoma. However, if there are floaters or there is a fixed lesion or a mass in front of the retina, which is impeding the normal vision of the retina, and the patient says that there is a black spot which is permanently fixed, that is a positive scotoma. Let's say there is a malignant melanoma of the choroid, okay, or a massive vitreous hemorrhage sitting in a fixed place. So that will appear as a black spot continuously. That will be a positive scotoma. ठीक है, और कुछ? छुट्टी करें फिर? No. नहीं करनी छुट्टी? ठीक है. चलो ठीक है. अच्छा, कोई और क्वेश्चंस हुए पूछ लेना, आप ग्रुप में आस्क कर लेना, तो इंशाल्लाह की बात डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज. Thank you. Okay, thanks. Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz.